नमस्कार। मैं हूँ आर्किटेक्ट हीरा मनी थपलियाल, आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिज़ाइन कंसल्टेंट। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव टॉपिक पर बात करेंगे। हाउ डज एन आर्किटेक्ट डिज़ाइन ए हॉस्पिटल बिल्डिंग? Hospital design is completely different from designing a normal commercial or residential building. A hospital is a highly specialized environment where patients, doctors, nurses, visitors, medical equipment, medicine, food, waste, and emergency service have to move safely and efficiently. Therefore, a hospital is not just a building; it is a carefully planned system for healing, care, safety, and medical operations. तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट स्टेप, अंडरस्टैंड द हॉस्पिटल। सबसे पहले आर्किटेक्ट को क्लाइंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, डॉक्टर्स, मेडिकल प्लानर एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट के साथ डिटेल डिस्कशन करना चाहिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप हॉस्पिटल इज इट। इज इट जनरल हॉस्पिटल, स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और ट्रॉमा सेंटर और टीचिंग हॉस्पिटल, या डे केयर हॉस्पिटल? Then we determine how many beds are required, which departments are required, what medical equipment will be used, what is the expected patient load. ये इंफॉर्मेशन हॉस्पिटल को कंप्लीट प्लानिंग को इन्फ्लुएंस करती है। सेकंड स्टेप, साइट प्लानिंग एंड असेसिबिलिटी। हॉस्पिटल के लिए साइट सिलेक्शन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। आर्किटेक्ट को स्टडी करना होता है अप्रोच रोड्स, साइट ओरिएंटेशन, ट्रैफिक कंडीशंस, नॉइज, सनलाइट, विंड, टोपोग्राफी, ड्रेनेज एंड सराउंडिंग लैंड यूज। हॉस्पिटल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस रिक्वायर्ड होती है। मेन पब्लिक एंट्रेंस, इमरजेंसी एंट्रेंस, एम्बुलेंस एक्सेस, स्टाफ एंट्री, सर्विस एंट्री एंड समटाइम मॉर्चरी ऑब्लिक सर्विस एक्सेस की बात करते हैं। इन मूवमेंट को केयरफुली ऑर्गेनाइज करना चाहिए। स्पेशली emergency access must be direct, clear and free from unnecessary obstructions. Third step, functional zoning. हॉस्पिटल को ब्रॉडली डिफरेंट फंक्शनल जोन में ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ओपीडी, emergency department, diagnosis services, operation theatre, ICU and critical care, inpatient ward, pharmacy, administration, kitchen and dietary services, laundry, store, biomedical waste area and other support service. इन जॉब्स की रिलेशनशिप केयरफुली प्लान करने होते हैं। फॉर एग्जांपल emergency should be an efficient relationship with diagnostic, critical care and operating facilities according to the hospital clinical model. Similarly, OPD should be easily accessible for parents without disturbing inpatient area. So, in hospital architecture, adjacency planning is an important as the size of the rooms. Fourth step, circulation. Hospital planning में circulation is one of the most critical issue. हमें different movement system को understand करना होता है। Patient movement, doctor and staff movement, visitor movements, clean supply movements, food movements, waste movements, emergency movement. Where possible, these flows should be appropriately separated and controlled. For example, a patient coming for OPD should not unnecessarily pass through the sensitive clinical or service areas. Similarly, clean material and biomedical waste should have appropriately planned route according to the hospital inspection control and operational requirement. Therefore, good hospital planning means design not only rooms but also the movement between those rooms. फिफ्थ स्टेप है डिज़ाइन फॉर द पेशेंट। हॉस्पिटल का सेंटर पॉइंट पेशेंट होना चाहिए। पेशेंट को इजी वे फाइंडिंग, नेचुरल डे लाइट, वेंटिलेशन, प्राइवेसी, अकॉस्टिक कंफर्ट, एक्सेसिबल टॉयलेट्स, कंफर्टेबल वेटिंग एरिया एंड सेफ मूवमेंट मिलने चाहिए। पेशेंट रूम एंड वार्ड्स को केयरफुली प्लान करते वक्त बेड लोकेशन, नर्स विजिबिलिटी, मेडिकल गैसेस, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स, स्टोरेज, विजिटर स्पेस एंड स्टाफ एक्सेस को कोऑर्डिनेट करना होता है। ए हॉस्पिटल शुड नॉट फील अननेसेसरी कन्फ्यूजिंग और स्ट्रेसफुल। सो गुड
Healthcare architecture should support physical feeling as well as psychological comfort. Sixth step, स्पेशलाइज्ड क्लिनिकल एरियाज। हॉस्पिटल के हाईली स्पेशलाइज्ड एरिया को डिटेल प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स, आईसीयू, एनआईसीयू, रेडियोलॉजी, लेबोरेटरी, सीएसएसडी, dialysis, isolation areas, and other specialized department. In these areas में infection control, sterile and non-sterile movements, air conditioning and ventilation, medical gases, electrical backup, equipment clearance, and maintenance access very carefully coordinated होने चाहिए। यहाँ आर्किटेक्ट को क्लीनिंग प्लानर, डॉक्टर, बायोमेडिकल स्पेशलिस्ट, MEP कंसल्टेंट, इक्विपमेंट्स सप्लायर के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन करना होता है। 7 स्टेप, सेफ्टी एंड सर्विसेज। हॉस्पिटल एक क्रिटिकल पब्लिक बिल्डिंग है, देयरफॉर सेफ्टी इज extremely important. We must carefully integrate fire detection and fire protection. Emergency exits, evacuation planning, fire attendant access, accessible circulation, lift, electrical backup, HVAC, medical gases, water supply, drainage, STP, biomedical waste management, and other essential service. So, hospital design must comply with the applicable building regulations, fire requirements, healthcare standards, and local authority requirement. So we just quickly remember the 7 principles of hospital design. Understand the healthcare program, analyze the site and provide appropriate access, create a logical, functional journey, plan patient, staff, and service circulation, create a patient-centered environment, carefully planned specialized clinical department, integrate safety, accessibility, infection control, and building service. And remember, a successful hospital is not simply a beautiful building. It is a building where medical care, people, technology, safety, and architecture work together to support healing. As architect, our responsibility is to create an environment that is functional, safe, efficient, humane, and future ready. For more practical lectures on architecture, healthcare design, Vastu and building planning, please follow me. Thank you. Namaskar.